हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एडवाइस है। तो गाइज़, ये है जो मैं शिवरात्रि स्पेशल ड्राइंग कर रहे थे शिवजी एंड पार्वती माँ, उसका ही सेकेंड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखे होंगे कि यहाँ पर मैं किस तरह से शिवजी को कलर किए थे। ये है नेक्स्ट पार्ट, इसमें मैं पार्वती माँ एंड बैकग्राउंड को कलर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। इस वाले पार्ट में गाइज मैं हेयर को किस तरह से ड्रॉ की हूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरह से वीडियो को देखकर समझकर ज़रूर ट्राई करना। आप लोगों को हेयर किस तरह से करना है, जो भी रेफरेंस है उसको ऑब्जर्व करना है एंड डायरेक्शन वाइज जो भी कलर करना है वो कलर करना है। और सबसे पहले लाइट लेयर चलाना है, देन उसके ऊपर आप जितना लेयर चला सकते हो एंड एक कलर के ऊपर दूसरा कलर चलाना है। तो भी उसके सबसे पहले जो कलर आप यूज़ कर रही हो वो थोड़ा सा लाइट करना है, देन उसके ऊपर आप डार्कली शेड कर सकते हो। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट जिन्होंने अभी तक नहीं देखे होंगे जाकर चेक कर सकते हो। एंड उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो मैं कलर पेंसिल यूज़ करी हूँ वो है डोम्स के कलर पेंसिल, एंड जो वाइट एंड ब्लैक कलर है वो है ब्रूस्टो के कलर पेंसिल। और गाइज, ये पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रूस्टो के मीडियम सर्फेस वाले पेपर। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, किसी का अगर हेल्प करता है तो ज़रूर शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करती हो और व्यूज़ तो छोड़ ही देते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है तो इस वीडियो के सेटिंग में जाके आप स्पीड को कम कर सकते हो। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. जहाँ पे गाइज मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स है, जैसे कि आई में जो वाइट एरियाज लाइट दिखाए हैं उसके लिए मैं यहाँ पर वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। अब आते हैं गाइस बैकग्राउंड के बारे। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर रही हूँ डॉम्स की ऑयल पेस्टल। तो यहाँ पर मैं डार्क ब्लू एंड स्काई और वाइट कलर से बैकग्राउंड को यहाँ पर कलर कर रही हूँ और थोड़ा सा जगह पे मैं येलो का यूज़ कर रही हूँ। ब्लेंड करने के लिए गाइस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉटन बड का एंड राउंड वाइज मैं यहाँ पर हाथ को चला रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। हमारा स्काई रेडी हो चुका है। अब है नीचे वाले हिस्सों को हमें कलर करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम बर्फीले पहाड़ एंड थोड़ा सा रॉक टाइप पहाड़ मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो उसके लिए रेफरेंस में जो कलर है वही यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। और गाइज़ ये जो रेफरेंस मुझे मिला है ये मुझे इंस्टाग्राम से मिला है। सेम प्रोसेस कलर अप्लाई करना है, देन उसको ब्लेंड करना है। मेरा ड्राइंग गाइज हो चुका है कंप्लीट। आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी महाशिवरात्रि।